spoken English day 10 आज 10 नंबर दिन आमर जो 1 month spoken English class चली आउ day 10 रे today we'll learn about the usage of past simple tense while speaking English while we are conversing in our day to day life दैनंदिन जीवन रे कथा हला बेले past simple tense रे व्यवहार केमती करिबा what is the structure behind past simple tense we'll have a discussion on these things. So what happens? Let's see the usage first of all. If we look at the construction, the past simple tense is constructed upon a normal structure, that is subject plus V2 structure. The structure is subject plus V2. This is the structure of past simple tense. So you can write the example I went. Yes or no? This is your subject and this is the V2 form of verb, that is called your past form of verb. So this is what we call the structure of past simple tense, as you can see on your blackboard. So what happens? So let's see the usage. Ko kshetra re ko jaga ame vyavahar korche. First things, we usually use the simple past form to talk about an action began and ended in the past. Konosi ek kama, if a work begin and ended simultaneously, begin and ended in the past, mane atitare arambh hoiki atitare hi sarichi, and this means the action might have happened in a short moment or over a longer period of time. सेटा गोटे किछि क्षण पई हेई थै पारे कि बहुत दिन धरि चली थाई पारे तो जो एक्शनटा सरी जाइछि अतीतरे आरंभ होई कि अतीतरे ही सरी जाइछि सेही कथा कहिला बेले हम पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर व्यवहार करू. फॉर एग्जांपल, I stopped reading before the evening. I stopped reading before the evening. संध्या बा पूर्व पढ़िबा बंद करि देली. That means तो से एक्शनटा आरंभ भी हेतिला आ सरी भी जाइछि. They fell down from the roof. से माने छात रु पड़ी गले. Yes or no? So these are the example of past simple tense, and this is short period of time. Over a longer period of time, we'll take if we'll talk about what longer period of time, you can say Guru was ill for 3 weeks. Guru was ill for 3 weeks. So 3 सप्ताह धरि से असुस्थ थिला. Yes or no? In this case, so 2 action I've told. One is shorter period of time, another is longer period of time. Rule 2. Number 2. Rule number 2 is what? We use the simple past form to talk about habits or action that happened repeatedly in the past. कोनोसी अतीतरे अभ्यासगत भावे कोनोसी कार्य करिथिला बेले आमे पास्ट सिंपल टेंस ता व्यवहार करतो. कोनोसी जिंस जदी हैबिचुअली तमरो होउतला एबे हो नाही. जेमिति फॉर एग्जांपल, यू कैन सी आई वर्क टू स्कूल इन माय चाइल्डहुड. आई वर्क टू स्कूल इन माय चाइल्डहुड. मुझे तळे छुआ थिली छोटो थिली मु कोन करथिली स्कूल को चल जाउथली. नाउ या आई एम गोना बाइक आई एम गोना बाइसाइकल एटसेट्रा. यस और नो? सो दिस इज व्हाट a habitual action of your past. When we talk about your habitual action of your past, at the time we use what past simple tense. Okay, let's see the third point. In which case, which more case we use the simple past form for 2 past event in one sequence. Simple past form केतेबेले after another without using different tenses. This means tense may be used to indicate the 2 events happening in sequences without much interval. दुईटा काम अतीत रे हेतिबा दुईटा काम जदि गोटे काम पर आ गोटे काम होईची गोटे सीक्वेंस रे होईची से जगह रे आमे व्यवहार करू कोन past simple tense. जे बोलिया when the teacher entered the class all the students stood up. When the teacher entered the class, past simple, all the students stood up, past simple. So दुईटा कामर सीक्वेंस पाखापाखि सीक्वेंस जदि हेछि आमे ए जगह रे कोन करिबा आमे पास्ट सिंपल टेंस व्यवहार करिबा. एटा 3 नंबर रूल थिला. 4 नंबर नियम कोन? पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट. पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को केतेबेले आमे यूज करूछु. If 2 action happened in the past simultaneously, जदि दुईटा एक्शन simultaneously पाखापाखि भाबे हेछि, we also use the simple past for later action and past perfect for earlier action. पिला मनकर कंफ्यूजन थाए सर एतरे दुईटा एक्शन भितर कोथरे मु पास्ट सिंपल लगेबी आउ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कोथरे मु लगेबी कोन? यस, पास्ट परफेक्ट लगेबी दुईटा एक्शन. तो यदि कोन हबो लेटर पास्ट लगे आमे लगेबा पास्ट परफेक्ट और नियर पास्ट लगे आमे लगेबा पास्ट सिंपल. फॉर एग्जांपल आमे देखिबा
When I reached the station, the train had left. When I reached the station, the train had left. When I reached, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କାମ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି କେତେବେଳେ? ମୁଁ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଲେଟର୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଟା ପରର ଆକ୍ସନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସେଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ଦିସ୍ ଦ ୟୁଜ୍। ଓକେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିୟମଟା ଦେଖିବା ପିଲେ। what is rule number 5? Sometimes we also use the simple past without an adverb of time. So in this cases the time may be either indicated by the context. केते केते बेले जेमिति फॉर एग्जांपल they learnt Bengali in Kolkata. Time context उपरे हम sometimes we use। आ गोटे जिनस पिले अछि सबटारो मोस्ट इंपोर्टेंट कहले चलिबो, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी आसुछि। when there is past adverbial like last month, last year, last day, yesterday, ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ past simple tense यूज करिबा। when there is a past adverbial, yes or no, use in a sentence, we must use the tense in that sentence in past simple tense। जेमिति मु गतकाली रामायण पढ़ुथिली, ए जगह आम टीचर माने आमको पढ़ाई दौरान पढ़ुली जेहेतु अच्छी यहाँ प्रोग्रेसिव हम, पास्ट प्रोग्रेसिव हम। आई वाज रीडिंग रामायण येस्टरडे, किंतु यही कनसेप्टा संपूर्ण भूल। एथरे हम आई रीड द रामायण येस्टरडे, मन रखा समस्ते। बट जदि यही जगह गोटे ट्विस्ट अच्छी, जदि कह जाए दुईटा एक्शन एट ए टाइम, जमती दुईटा टाइम सपोज मु काली 4टा बेले रामायण पढ़ुली, एथरे 4टा बेले आ गतकाली दुईटा टाइम जेहेतु अच्छी यही जगह आमे पास्ट प्रोग्रेसिव यूज करिबा, कारण अतीतर घटिथिबा कोनोसी गोटे घटना माने निरंतर घटिथिबा घटना पई आमे प्रोग्रेसिवटा यूज करू। तो एठी आमे जेहेतु निर्दिष्ट समय जेतले मेंशन हेतिबा आमे व्यवहार करि पारिबा। आई थिंक यू आर क्लियर। अच्छा पिले आउ गोटे स्ट्रक्चर अच्छी आम यूज टू, जिते बड़े आम अतीतर कौन पास्ट हैबिट विषय कथा हो, कंटिन्यूअस पास्ट हैबिट जोटा से होता है हो ना, आम यूज टू भी व्यवहार करि थाउ पास्ट सिंपल सहित। जमी माय फ्रेंड हेल्प मी ए लॉट एट कॉलेज, माय फ्रेंड यूज टू हेल्प मी ए लॉट इन कॉलेज, माय फ्रेंड यूज टू हेल्प मी ए लॉट इन माय कॉलेज। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। एटा थिला दिस इज द यूसेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। लेट्स सी द यूसेज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव। बर्तमान देखिए आम पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा पिले पास्ट प्रोग्रेसिव रो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी। जमती आई वाज गोइंग, मु जाउथली, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब आईएनजी। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा ये पास्ट प्रोग्रेसिव को क्षेत्र में व्यवहार करूँ, व्हाट आर द रीजन्स एंड व्हाट आर द सेक्टर्स वेयर वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव। लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज we use the past progressive form to talk about an action that was going on or was in progress at a particular time in the past। मु आगु कहूली जदि पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट कौन सी गोटे निर्दिष्ट अतीतर कौन निर्दिष्ट समय किसी समय धरी चली कम आम कौन व्यवहार करूँ, वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जमती इट वाज रेनिंग ऑल नाइट, राति सारा वर्षा होता एबे हो नहीं, इट वाज रेनिंग ऑल नाइट। व्हाट वर यू राइटिंग लास्ट इवनिंग, व्हाट वर यू राइटिंग लास्ट इवनिंग, गत काली संध्यारे तुम कौन लिखुल। सो दिस आर द एग्जांपल। रूल नंबर टू we use the past progressive form for the longer action and the past simple for the shorter action। जिते बड़े दुईटा पास्ट इवेंट अच्छी साइमल्टेनियस पास्ट इवेंट अच्छी लंगर एक्शन पर आम कौन व्यवहार करवा, फॉर द लंगर एक्शन वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव एंड शॉर्टर एक्शन वी यूज द पास्ट पास्ट सिंपल। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज राइडिंग द हीरो होंडा आई फेल डाउन। व्हेन लुक एट द एग्जांपल, व्हेन आई वाज राइडिंग द हीरो होंडा, मुझे जो हीरो होंडा चढ़ुली आई फेल डाउन, मु पड़ी गली। टू एक्शन। Second example, while I was bathing the telephone rang, while I was bathing, while लगे नॉर्मली केस मान करे while I was bathing the telephone rang, मुझे तो गाधौली कौन है टेलीफोन टा बाजिला। ठीक अच्छे।
Okay, rule number 3, we can also use the past progressive form to talk about action. Talk about an on present action that took place repeatedly. Present simple, present progressive रे आमे ए स्ट्रक्चर टा पढिथिले, पास्ट प्रोग्रेसिव रे भी ए स्ट्रक्चर टा हम पढुछु कोन कोन सी जिंस रिपीटेडली अन प्रेजेंट एक्शन जदि रिपीटेडली तम सहित होउची, इन दैट केस यू कैन यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. जेमती माय फ्रेंड्स वेर ऑलवेज बेगिंग फॉर मनी. मो बंधु माने सबु बेले मते पैसा मागंती. Always begging for money. Yes or no? My younger sister was always disturbing me at study. My younger sister always disturbing me in my study. So more sana bhoni mate sabale path padha disturb karuchi. Yes or no? Okay. So this is the usage of what? Past progressive. Let us go to past perfect form. Past perfect. What is past perfect? The structure of past perfect. Let me tell you the structure of past perfect tense. The structure of past perfect is subject plus had plus B3. This is the structure. I had, done. Look at this. What happened? Subject had plus B3. This is the structure. So subject plus had plus B3. This is your past perfect tense, and this is the structure of past perfect tense. So a completed, when we talk about a completed action in the past which has no relevance with the present, we use the past perfect tense. केतेबेले जेतेबेले कोनोसी गोटे एक्शन अतीत रे समाप्त हो जाइछि एवं तार संपर्क वर्तमान सहित नाही, we use it. So let us see what are the usage of past perfect tense. Okay, fourth thing, let us see. She had danced on the stage. Yes, Lakshmi Priya, very good beta. If two actions happened in the past, the action that happened earlier is put in the past perfect and the later action is in the past simple. दुईटा action जदि रही अर्लियर एक्शन लगी, दुईटा फास्ट एक्शन अर्लियर एक्शन लगी आम पास्ट परफेक्ट यूज करवा, और लेटर एक्शन लगी आम कौन व्यवहार करवा? पास्ट सिंपल व्यवहार करवा. जमती द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड द स्टेशन. आम पास्ट सिंपल रे भी पढ़ुले ये यूजटा, एठी भी से यूजटा अच्छी. ओके, रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 कौन कहे? द पास्ट परफेक्ट फॉर्म इज यूज विथ सच वर्ब्स लाइक होप, थिंक, एक्सपेक्ट, इंटेंड, इन द, सपोज एंड वांट. These are some verbs. Okay, these are some verbs. Hope, mane rakhiba. Hope, think, expect, intend, in the, suppose, and want. When we use this verb with past tense, we have to use past perfect tense. Like, I had hoped that he would sing a song. ମୁଁ आशा କରୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ, but ସେ ଗାଇଲା ନାହିଁ. Number 2, I had intended to assist my friends. मोर इंटेंशन थिला मु मोर सांग मानकु कौन करथांती? साहाଯ୍य करिथांती. बट अनफॉर्चुनेटली I had supposed that our friends would visit us. मु भाबुथिली मोर सांग माने मते visit मो पाखु आसीबे बुलिबा पे, but they didn't. Okay, rule number 3 देखिबा मैं. When the simple past representing real sense change into the past perfect, जेतेबेले simple past आ real sense को depict करूथाए एवं past perfect to change हुए if sentence expressing unreal sense, कौन सी sentence जदि unreal sense express करूथाए. Here we can take the following 3 type of conditional structure. Condition 3 ताहले third condition रे आमे व्यवहार करिथाउ कोन मोटा मोटी भाबे कहबा गले we use the past perfect tense with third condition. Third condition. कौन third condition? If I had studied hard, I would have got more marks. If I had studied hard, मु जदि भल से पढ़ी थांती, I would have got more marks. Would have plus B3. एपटे कौन अच्छी? Had plus B3. Had plus B3 plus would have plus B3. This is the structure of third condition. कंडीशनल टेंस टाइम मिले मु पढ़ाइबी. या परे स्पोकन इंग्लिश रा 1 मंथ कोर्स होला परे हम रेगुलर ग्रामर क्लास करिबा. यस, कंटिन्यूअस ग्रामर क्लासेस विल बी देयर. ओनली ग्रामर विल बी देयर. यस, 11:30 रे सबले ग्रामर क्लास ही हबो. ओके पिले एटा थिला तमरो यूसेज ऑफ व्हाट? पास्ट परफेक्ट टेंस. वर्तमान में देखिबा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो व्यवहार कोन कोन सब अछि. Usage of past perfect progressive. Past perfect progressive पिले ता स्ट्रक्चर कौन? Subject plus
had plus been plus verb ing. I had been playing. I had been playing. I had been going. I had been writing. I had been speaking. I had been working. Yes or no? So subject plus had plus been plus let me write the example. I have already written the structure. So I had been playing. You can write I had been playing. So this is the sentence. This is the sentence. Look, subject, and this is had, this is been, and this is the ing form of verb. This is what? This is called your perfect progressive. Why it is called perfect progressive? Let me explain why it is called perfect progressive. Look, had plus B3 is there. Had plus B3. This is had, this is B3. That means this is perfect, and auxiliary plus verb ing. This is progressive. That's why it is called past progressive. Did you get my point? This is the reason why it is called past progressive. Scientific reason, grammatical reason, not भुआ बोलेवा नहीं. तो एथरे गोटे रूल अच्छी. कौन रूल अच्छी? The past perfect progressive continuous form is used for an action that began before a certain point in the past and continue up to that time. माने लोक जो पर्यंत कहूथुबो से पर्यंत चालुथुबो एवं आगरू माने आरंभ होइकरी सरी जाइथिबो. अतीतरे गोटे जिनस आरंभ होइछि एवं से कहला पर्यंत चलीछि से माने से अतीतरे सेही केस रे हमें व्यवहार करिबा कोन? यस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. फॉर एग्जांपल हमें देखिबा उदाहरण देखिबा पहिले. उदाहरण होछि आई हैड बीन राइटिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 5 years. I had been writing English grammar for 5 years. I had been practicing English grammar for 21 years. So these are the cases. मु practice करूथली 20-21 वर्ष धरिकी. तमे practice करछो 10-12 वर्ष होइगनी. So this is what the use of past perfect progressive. So that's all for the day. See you tomorrow in the class. आज संध्या बेले संध्या क्लास रे 10th क्लास रो क्लास होबो. आ पिले किछि दिन परे नेक्स्ट वीक रो मु भाबुची केवल वी विल कंसंट्रेट ऑन +2. सेकेंड ईयर रो क्लास कंस्टेंट क्लास करिबा. सेकेंड ईयर क्लास आमे सारीबा. सेकेंड ईयर क्लास रो रिवीजन दरकार अछि. सो वी विल रिपीटेडली स्टडी +2 सेकेंड ईयर एंड +2 फर्स्ट ईयर. +2 सेकेंड ईयर एंड +2 फर्स्ट ईयर 10 ताकू काटी दवा. सो सी यू देयर टुमारो in the same class at 11:30 am and see you in the evening at 7:30 am. Thank you. Thanks for watching. Stay tuned with Master of English.